Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video session on PIB monthly compilation, and I'll be discussing PIB for the month of October. Whatever news that was reported for the month of October, the important news, the filter news that is important for civil services examination will be discussed in this session. And just a disclaimer that whatever we are discussing is from the examination point of view, from the prelims and mains perspective. And if you want to get the most outcome of the initiative which is there in YouTube, make sure you also watch PRS which is there और योजना भी आप साथ के साथ देखें ताकि योजना PIB और साथ के साथ जो PRS की वीडियो है उससे आपकी comprehensive preparation हो पाए civil services को लेकर के. Now let's get started with a detailed discussion of the PIB compilation for the month of October. We'll be moving by the paper-wise discussion will be there. General Studies paper 2, 3. उसके बाद कुछ news which is brief in nature, कुछ bilateral agreements, and then we'll conclude this session with the military exercises. So let's get started. So first we'll start with General Studies 2 related news which was reported and again relevant for the examination. Among them, the first is Mera Yuva Mera Bharat platform, right? So Mera Yuva Bharat platform was again launched by the government of India, something again important, which called for a lot more other innovative in terms of India's development. So we'll see the detail what exactly is Mera Yuva Bharat platform. So this platform was actually approved by the Union Cabinet, and the government has decided to establish an autonomous body that will be known as My Bharat. So My Bharat will be a body, autonomous body that will be created, right? Now this body will benefit the age group that is between 50 to 29, and the definition of Indian youth policy, if you look at the India national youth policy, जो youth की definition है उसके अंदर 15 to 29 is categorized as youth. The beneficiaries will be in the age group of 10 to 19 as well, but there are certain restrictions and limitations. The primary objective of Mera Yuva Bharat is to make whole government platform for the youth development. Why youth development? See, India is a country which has a huge demographic dividend, right? अगर demographic dividend की बात करें, we have the potential, and even to ensure जिस तरह से youth की population बढ़ रही है, we need to align them in the right direction. That is the reason government has come up with the autonomous body named, and the initiative will be known as Mera Yuva Bharat or My Bharat. So what exactly is the broader vision of the government of India? इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है which will foster the youth development, empowering the youth to the leadership progress, to make them aware how the lead process can work, and they should give an endeavor that they are actually contributing in the nation development. So this is the sole purpose. The nation development or the nation growth should be prioritized. Now, the primary objective of this is to provide the equal opportunities, enabling to achieve the dream and actively participate in the development of India. So this is how they will be actually working. And the initiative aims to provide growth of a Viksit Bharat, or you can say that developed country. India is still a developing country. Will be looking forward with the developed countries by engagement of the youth at the various government level with the government initiative and making their prosperity in the different sectors. Now क्या objective है इस particular platform की? First and foremost, it will call for the leadership development. So LD is the one foremost priority which call for youth and improve the leadership skill of the Indian youth. उसके साथ साथ better alignment की जाएगी youth की aspirations की and community development. Energy efficiency through convergence and existence of the program. As a one-stop solutions will also be there for the ministries. This was something that will call for the coordinations between the ministries, creating a centralized youth database ताकि अगर government को कोई policy बनानी हो, the policy formulations can be done with a database that is actually there. Improve two-way communications to connect the youth initiatives and even the stakeholder engaged with youth, and ensuring the accessibility by creating a physical ecosystem for Indian. So these are some of the main objectives that will be actually done through My Yuva platform. Now moving ahead with the other news, that is the 9th G20 Parliamentary Speakers Summit, something very important. India is actually the current chair of G20 जो कि इस month में expire हो रही है,
November 2023 till India will continue to be the part of the G20 summit, उसी के अंदर P20 की स्पीकर समिट की गई है. So, Prime Minister has inaugurated the ninth G20 Parliamentary Summit. This number is important. और ये होस्ट करेगी और सारे मेंबर कंट्रीज को. थीम जो है इस बार की थीम इज इंपॉर्टेंट. द थीम इज पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है वो G20 की भी थीम है. उसके आगे से आप पार्लियामेंट लगाएंगे. दैट विल बी द थीम फॉर द P20. Now, high level discussion होनी है. कौन कौन से ऐसे areas हैं that will be specifically in the focus. The first is the SDG target, right? जो Agenda 22 है, the Agenda 2030 precisely to correct it. Agenda 2030 for Sustainable Development Goal and even the achievement accelerating the progress is the sole most priority. Sustainable energy transitions ताकि गेटवे हो सके ग्रीन फ्यूचर की. India has set target for net zero emissions by 2070. और भी ऐसे कई टारगेट है जो इंडिया 2030 तक अचीव कर पाएगी. मेन स्ट्रीमिंग द जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लेड एम्पावरमेंट बढ़ाने की बात की है. वी हैव सीन दैट द रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड अदर असेंबली सीट्स. 33% रिजर्वेशन की बात की गई है. Transformations in the people life through digital public platform. These will be the high, these are the actually core area that has the discussion. Now, focus क्या है P20 summit की? They emphasize on life is beautiful initiative through the pre-summit event. और इसके through जो main priority है that is so triple P, right? P3 that is called as pro people planet or pro planet people to seek the leverages in the practice and to build sustainable ecosystem. जहाँ पे R3 की concept को रखा जाएगा that call for reduce, reuse and recycle. Now, other is Digital India Act, something again important. Prelims point of view से आपसे MCQs पे सवाल पूछे जा सकते हैं. A direct question on the MCQ can be framed. So, what is this? The India's Digital India Initiative, जो कि एक significant boost करेगी इंडिया के overall डिजिटल perspective को, उसके लिए लाई गई है. और ये recently अनाउंस की गई थी जहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क कंट्री के बर्निंग डिजिटल इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करने के लिए. नाउ टू प्रोवाइड अ रोड मैप द गवर्नमेंट हैज कम अप विद डिजिटल इंडिया एक्ट. नाउ दिस विल फुल्ली रिप्लेस द करंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000. इससे पहले जो आईटी रूल 2000 है वो एप्लीकेबल थी और इसके कुछ प्रोविजंस काफ़ी सख्त भी माने गए. लाइक आईटी के जो सेक्शंस हैं जहाँ पे दे आर पार्ट ऑफ रिपरकशंस विच इज़ देयर. और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस भी थे जो पुराने हो गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे चेंज करना बेहतर समझा. द प्राइमरी मोटिवेशंस बिहाइंड द डीआईए इज टू ब्रिंग द रेगुलेटरी लैंडस्केप sync with the digital revolutions of 21st century. Now, what are the key provisions? So there are 5 important 4 areas that has been highlighted. The first is digital infrastructure development, जहाँ पे जो overall infrastructure development, if you look at infra part, this is again important for overall part of digitalizations and getting the state of art technology. The second is the data privacy and security, ताकि प्रोटोकॉल बनाई जाएगी. जो सेंसिटिव डेटा है उनकी हैंडलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी करेंगी. वी हैव डिफरेंट एजेंसीज, वी हैव CERT, वी हैव NIC विच इज एक्चुअली वर्किंग फॉर इट. साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी के सेफगार्ड को स्ट्रेंथन की जाएगी ताकि साइबर थ्रेट और अटैक से बचा जा सके. डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली जो स्किल की पार्ट है, द स्किल डेवलपमेंट विल बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द डिजिटल टेक्नोलॉजीज. And promoting the emerging technology, support research and development, even that include the part of artificial intelligence, Internet of Things and machine learning. Now, National Turmeric Board, ये एक बहुत important board बनाई गई है. You can expect a question in prelims and one day examination में भी कई बार इस तरह के सवाल relevant. So Center has recently notified the National Turmeric Board, जो कि फार्मर की ongoing डिमांड में से काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए. दिस विल एक्चुअली फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ये जो टर्मरिक बोर्ड होगी इसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट प्रेसिडेंट, राइट? मेक श्योर यू टेक ऑल नोट ऑफ दिस. द मेंबर ऑफ द बोर्ड विल रिप्रेजेंट द वेरियस मिनिस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, टर्मरिक फार्मर्स, एक्सपोर्टर एंड मेनी मोर स्टेक होल्डर्स. द सेक्रेटरी विल बी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज टू क्रिएट
द अवेयरनेस ऑफ द कंजप्शंस ऑफ द टर्मरिक ग्लोबली. अगर टर्मरिक की बात करें इन इंडिया, वी डेफिनेटली गिव द ड्यू इम्पोर्टेंस टू टर्मरिक. लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे भी देखें, इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है. टर्मरिक हैज़ बीन क्वाइंड एज सुपर फूड इन मेनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट. और इसके ध्यान में रखते हुए द मार्केट एक्सेस फॉर दिस विल कॉल फॉर बूस्टिंग द पार्ट ऑफ मार्केट एक्सेस, और इसके एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा इस बोर्ड के थ्रू. Encouraging the research and development and innovations of the turmeric products, promoting traditional knowledge and value additions of the turmeric items. Now, productions in India की अगर बात करें, in India we have seen that the consumer products of the turmeric worldwide has enhanced. अगर पिछले साल के मुकाबले देखें 2022-23 में the area of 3.24 lakh hectare was actually where the turmeric was cultivated, और ये बढ़ करके production in India has actually reached up to 11.6. There are more than 30 variety of turmeric. You can see in India the wide variety of turmeric are grown in 20 states. कुछ ऐसे 20 states हैं जहाँ पे ये grown की जाती है. और अगर बात करें largest productions की, तो महाराष्ट्र as one, then we have Telangana, we have Karnataka and Tamil Nadu. These are the states suitable for the productions of turmeric. Now, export में India has been exporting turmeric to countries like Bangladesh, UAE, United States and Malaysia. Or center export turmeric reach around 1 billion by 2030. This is an anticipation, and it is like India will be leading the global turmeric exporter. अभी भी है और आने वाले समय में इंडिया की दायरा को और भी बढ़ाया जाएगा. Now, some important news that is from the GS3 perspective, General Studies Paper 3 Mains के लिए जो चीजें news हैं, we have categorized accordingly. Now, here first is the Global Maritime India Summit 2023. This took place in Mumbai. BKC में हुई है ये, और इसकी जो मेन थीम थी that is connect, collaborate and create. So प्राइम मिनिस्टर ने और इनॉग्रेट किया है थर्ड एडिशंस ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम समिट. समटाइम द नंबर बिकम इम्पॉर्टेंट, और मेन इसकी कोशिश है दैट इट विल कम अप विद द ब्लूप्रिंट फॉर द इकोनॉमी, हाउ द मरीन इकोनॉमी कैन प्रमोट द पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी. अमृतकाल विजन जो गवर्नमेंट ने 2047 के लिए लॉन्ग टर्म विजन बनाई है इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी, उसको ये प्रायोरिटाइज करेगी. So the blueprint outlines some of the important strategies which call for enhancing the port facility. This is the one. Second, we have promoting the sustainable practices. And third, we have been promoting the part of global collaborations. ये तीन priorities हैं government of India की to ensure that blue economy, the blue economy is a part of overall development, और जो vision है government की 2047 को, उसको पूरी की जाएगी through this initiatives. Now, focus क्या है? Key areas की अगर बात करें maritime sector की, first is the port is future. Definitely it's future because it's had the logistic cost is pretty less compared to any other way. Decarbonization है, तो उसमें भी मदद मिलती है. Coastal shipping and inland water transportations, shipping repair and recycle, maritime clusters and maritime tourism. और इस summit के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे और कंट्रीज को भी पार्टिसिपेट किया, लाइक यूरोपियन, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं, एशिया में एशिया, मिडिल ईस्ट और बिम्स्टेक के रीजन में भी इंक्लूड की गई. And moving ahead with other news, that is AI Safety Summit 2023. This was hosted by United Kingdom, something very important not only for India but for many countries concerning the uses with AI. AI की safety को ध्यान में रखते हुए, AI के uses को ध्यान में रखते हुए, there was a summit that took place in United Kingdom, right? This was there from 1st to 2nd of November, और ये काफ़ी important news है जहाँ पे आपसे AI रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं. इन मेंस स्पेसिफिकली यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट द AI safety regulation and global efforts that is being made with regards to AI safety. So there was a actually declaration which was there. This comprises of a comprehensive snapshots which uses the artificial intelligence promises and risk. अगर इसके बैकग्राउंड को देखें, जो एक्चुअली डिक्लेरेशन है, दैट एड्रेसेस द रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी associated with the frontier AI and comprehensive collaborative manners. इसके साथ साथ जो potential severe catastrophe है, harms like AI, whether the intention or unintention part is there, we should also look into that part. And the declaration also endorses countries like Brazil, Ireland, Kenya, Saudi Arabia, Nigeria, and United Arab Emirates have also supported for AI regulation. This is something which has become the mandate for many other countries as well. Now, what is the significance? See, considering the fact that it has highlighted the safeguard need of the human right and human safety. अगर बात करें human rights की, human right
and right to privacy has also become very important. So transparency, fairness, accountability, safety, ethicalness, the bias mitigations, data protection, this also has been highlighted. And the new rules codify the use of watermark and alert consumer enabled by AI that could potentially limit the threat posed by the deepfakes. We have recently seen the celebrity cases with regard to deepfakes. जो deepfake के frauds हैं वो काफ़ी हाई हैं. इसको ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एआई regulations भी बनाए. These two countries have their comprehensive AI policies. Now, sixth session of International Solar Alliance. This is again important. ISA पे there have been question in CSA, in the UPSC CSA examination. So make sure आप जो भी countries ISA के अंदर आते हैं उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें. So sixth assembly of the International Solar Alliance was held at Bharat Mandapam in Delhi. The International Solar Alliance consists of 116 members that come up with the Global Solar Stocktake report that aims at building the worldwide solar technology adaptations. See, सोलर एनर्जी की अगर बात करें दैट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने में सोलर टेक्नोलॉजी की काफ़ी अहम भूमिका है. So focus area as their country with India and France has scheduled the 6th annual meeting और इस assembly के through basically जो viability gap fund VGP that is something that was there right और इसके through जो funding project की cost है 10% से 35% की गई है. The focus area of the organization by expanding the solar installations and even the organization that has set up the global solar facility. So the global solar facility was actually in short so that the financial part should be taken care of. It aims to boost the part of solar investment, खास करके Western Asia, Latin America और Caribbean countries में these are the country which is actually the part of International Solar Alliance. Now, financial funds में कुछ important fund को categorize की गई है. The first fund is the payment guaranteed fund. Second fund we have insurance fund for mitigation project risk. And third, that is the investment fund for technical assistance. Now, other news, that is the National Action Plan for Green Shipping. Something again important that called for a vision, that called for a roadmap for the government of India with regards to the green shipping. So basically INMX SM की बात करें 223 में कॉन्फ्रेंस हुई थी by the Director General of Civil and national plan was actually devised out for the green shipping that encourage the environmental friendly practices and maritime industries and even the security concerns. India की maritime sectors की बात करें, if you look at the coastal borders, we have 7,500 kilometers coastline which is there, the largest in the world. And the country had 12 major ports or 2,200 notified minor ports P&M. And these maritime sector contribute significantly in the economy, handling 95% of the country trade by volume and 70% by value. So these are again the factual information that you can take note for the both prelims and mains examination. India maritime sector will play a pivotal role in achieving the 20 trillion economy by 2047. So these are some of the important and vital information जो आपके एग्जाम्स में भी यूज कर पाएंगे. Now नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग भी बनाई गई है जहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इंसेंटिवाइज की जाएगी. Positioning the maritime sector for prosperous environmentally responsible futures, a recent achievement for the sector will also be there. And progress is fueled by transformative reform like Sagar Mala and digitalization initiatives. Now, some news which is brief in nature and important for both prelims and one day examination. इस तरह के जो short news हैं prelims में और one day examinations में काफ़ी ज़्यादा relevant. Among them, the first is the 7th edition of Indian National Mobile Congress. Mobile Congress actually में something which is there भारत मंडपम में held की गई थी. इसकी aim है to strengthen India's positions in terms of developer, manufacturers and key cutting edge technology. तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव्स ली जाती हैं. दिस वाज द 7th एडिशन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एट लार्ज स्केल. अगर बात करें कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स के, टेक जाइंट लाइक एप्पल आर ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग देयर एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चर. ऑपरेशन अजय, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, मैंने आपके साथ डेली न्यूज़ एंड एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था. इसराइल में जो खास करके डी एक्सकलेशंस हुई है हमास के, उसको लेकर के एक ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया जहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस की गई थी एंड द ऑपरेशन वाज टू रिपेट्रिएट द पार्ट ऑफ सिटीजन फ्रॉम इसराइल.
The other news is India's first rapid regional rapid transport system. We have already made a video on NIF न्यूज़ इन फोकस. अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं. एक कॉरिडोर बनाई गई है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में. So this is actually developed by the National Capital Transport System, which is helping the state like Delhi, Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh. This corridor is 82 किलोमीटर that will be covered in our, और इसमें 24 स्टेशन को एक्चुअली इन्विजन की गई है जो कि धीरे धीरे और डेवलप होंगे. 937 नेशनल गेम इन गोवा. द वेन्यू बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली. और इसके थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट ने कोशिश ये की कि जो 10,000 एथलीट्स हैं उनको पार्टिसिपेट कराया जाए नेशनल गेम्स में. 43 स्पोर्ट्स और 28 वेन्यूज में ये होनी है. मारगाम इन गोवा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. दीज आर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. Now, some bilateral agreement and summit that was there for the month of October. Among them, the first is India-UK Free Trade Agreement, or we call it FTA Trade Pact. तो दोनों कंट्रीज ने comprehensive trade pact रिलीज किया. 26 चैप्टर्स पे बात होनी है and the consensus has been met on 24. But just to remind, ये नवंबर में होनी थी दिवाली के टाइम. But still, we have not made substantial progress. Let's see. Both countries are looking forward for the part of progress. Now, proposed FTA में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हाईलाइट की गई. टोटल 26 चैप्टर्स हैं, मेजॉरिटी पे बात हो रखी है. कुछ सेक्टर्स हैं जैसे इस पे काम करनी है, दैट इज IT, हेल्थ केयर, UK मार्केट, बिसाइड एक्सेस टू अदर गुड्स एंड कस्टम ड्यूटीज. UK is seeking import duties for Scotch whiskey, automobiles, lamb meats, chocolates, and certain confectionery items. Now, bilateral trade की अगर बात करें इंडिया और यूके के बीच में, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग पार्टनर्स. और यूके ने इंक्रीज किया अपने ट्रेड को 20.36 बिलियन और दिस वाज अर्लियर 17.5. यूके इज लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन मार्केट. The segment like telecommunication is a one segment, and legal and financial services, and banking and insurance. So these are the sector where UK companies and enterprises are looking forward for more investment and establishment in India. Now, the other country which is in the bilateral relation is Japan India Semiconductor Supply Chain Partnerships. Prime Minister ने approve किया है MOC, that is the Memorandum of Cooperations between India and Japan for the semiconductor supply chain. Now, इसके थ्रू strengthen की जाएगी cooperations को, which aim to extend the part of cooperations between India and Japan. Enhancement of the semiconductor supply chain, recognizing the importance of semiconductor, advancement of industries and digital technologies. Now, MOC जो MOC हुई है, Memorandum of the part of cooperations which is there, is from the date of signature between the parties, and it will be enforced for 5 years. 5 सालों के लिए रहेंगी. And the G2C and B2C bilateral agreement will be there. जो business to business and global to global partnership and opportunities will be explored in the semiconductor sectors, leveraging the complementary strengths. The third country is India UAE High Level Joint Task Force. Basically, this was actually held in Abu Dhabi. The Joint Task Force has established the promotions for investment, economic ties between India and UAE. UAE is a trading partner for many different segments, be it crude oil, even the part of imports with regards to the other essential minerals. या फिर बात करें ऐसे कुछ stones की, other things are also taken care by India and UK. Now, prosperities की अगर बात करें, and prospects and opportunities which is there, the joint task force has been effectively working towards the prospect for the investment, and even the resolutions will be there between the two countries. जो कीपा के agreement है, the comprehensive economic partnership agreement, which is a landmark agreement, have seen both countries strengthening their cultural ties, political ties, and even the economic ties. जो delegations थी, they have actually come up with the UAE, United Arab Emirates, and even the underscoring the accelerating the part of conclusions, and both countries was actually benefited with the part of investors that is functioning. Some military exercises and initiative. This is the last part of our discussion. We'll discuss some of the military exercises and initiative that was relevant in the news for the month of October. एक्सरसाइज सागर कवच, ये कोस्टल सिक्योरिटी है जो कि बेसिकली कंडक्ट की गई बाय इंडियन नेवी इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड UTF पुडुचेरी. ये एक्सरसाइज के थ्रू एफिशिएंसी और रोबोटनेस बढ़ाने की कोशिश की गई है इंडियन नेवी की. द एक्सरसाइज हैज विटनेस्ड अ क्लोज कोऑर्डिनेशन सिनर्जी अमंग द कोस्टल सिक्योरिटी स्टेट होल्डर्स. मल्टी नेवल एक्सरसाइज 2024, जिसे मिलन भी कहते हैं, दिस वाज देयर इन विशाखापट्टनम और ईस्टर्न कमांड ने इसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया था. The Milan is a biennial multi-level exercise which was hosted
and incepted by Indian Navy since 1995. तो ये नई नहीं है, 1995 से हो रही है. And it was in consonance with the locust policy that the government of India active policies के through इस तरह के exercises की जाती. Exercise Harimau Sakti 2023. This was between India and Malaysia. The name of the country is important. There can be direct examinations questions in CAPF और इससे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे और मोई कैंटोनमेंट में की गई थी. Exercise found boosting the military capabilities and between the two nations. The exercise also witnessed the employment of drones, UAV, and helicopters. The exercise aimed to enhance the level of defense cooperation in Indian Army, Malaysian Army, but has also fostered the bilateral relationship between the two nations. And the last exercise is Exercise Khazin 2023. This was between Indian Army that has participated in the 7th edition. 7th edition is the year. The joint military exercise was between India and Kazakhstan, these two countries. From the name it is evident. और ये कॉपरेशन जो है दोनों कंट्रीज के में की गई है बिटवीन द कॉम्पैक्ट रेडीनेस काउंटर टेररिज्म विद द यूएन मैंडेट. जो यूएन की मैंडेट है उसके अकॉर्डिंगली द एक्सरसाइज हैज फर्दर अपग्रेडेड द बायलैटरल सर्विसेज बाय द ईयर इंक्लूडिंग द एयर फोर्स कंपोनेंट. सो दीज वर आल्सो द पार्ट एयर फोर्स दोनों कंट्रीज की जो इंडिया और कजाकिस्तान की है दोनों ने मिलकर इस पे काम किया. So this was all about for the daily news, the part of the PIB compilation basically, just to get it correct. तो ये PIB compilations हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी आपके prelims और मेंस में. To get most benefit आप PIB, PRS और योजना के जो वीडियोज़ हैं वो साथ में इकट्ठे करेंगे. So this was all about for the PIB compilation. Thank you so much for watching. Stay tuned for more informative videos. We'll come up with all part of information that is relevant for the examination. Thank you so much for watching. Thank you for stay tuned with the Apti Plus Academy.